हेलो एवरीवन, आई एम प्रखर एंड बहुत दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इट्स आई यूज्ड टू रिकॉर्ड सो मेनी वीडियोस एंड अपलोड इट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री रिसाइटमेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस वीडियोस रिकॉर्ड करना नहीं चाहता हूँ या फिर इंटरैक्ट करना नहीं चाहता, बट देन आई हैव बीन बिजी एंड आई हैव बीन बिजी इन परसुइंग माय करियर ऑप्शंस। थोड़ा वक्त उसको भी देना होता है, सिर्फ आवारापन से नहीं चलेगा काम, कुछ तो जीने खाने के लिए भी चाहिए। Secondly, I've been busy reading. I've been through a different set of mind recently, so that has that had created an obstacle, let's say, in recording videos. The purpose of creating today's video is talking about a book, or let's say a travel story. Uh, and it is not essentially to talk about the travel story only, but what implications that travelogue or what implications that travel story had on the person who was traveling. I mean, India as a country has been, I mean, we have read so much in literature, so much in history about so many travel stories. हमने हमने स्टार्टिंग से ही माइग्रेशंस की कहानियां सुनी है, हमने आर्यन माइग्रेशन देखा है, हमने रेनेंसिएटरी ट्रेडिशन देखा है। 600 बीसी के आसपास एक रेनेंसिएटरी ट्रेडिशन की शुरुआत होती है, द मोस्ट वाइब्रेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेर इन पीपल वांटेड टू वॉक आउट ऑफ देयर हाउसेस इन द सर्च ऑफ नॉलेज। हमने बुद्धा को उस ट्रेडिशन का पार्ट बनते देखा, महावीरा को बनते देखा, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। देन हमने माइग्रेशंस इन फॉर्म ऑफ इन्वेजन्स देखे, हमने ढेर सारी ट्रैवल स्टोरीज पढ़ी, हमने मार्को पोलो को पढ़ा, एल्बेरूनी को पढ़ा, फाहियान को पढ़ा, कोइंसान को पढ़ा, और ढेर सारे हैं, पता नहीं कितने सारे ट्रैवलर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अलग किस्म के ट्रैवल्स पढ़े। हमने इस किस्म के ट्रैवल्स पढ़े जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं अपने आसपास की जगहों पे बेहतर तरीके से अपने देश को जानने के लिए। अभी रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा बहुत फेमस हो रहा है, राहुल गांधी का। Many good luck to him. I wish a lot of luck. May he come up with some concrete result out of this भारत जोड़ो यात्रा। बट देन ट्रैवल्स हमेशा इस तरह के नहीं रहे थे जैसा हम आज देखते हैं, जैसा हम भारत जोड़ो यात्रा में देख रहे हैं। या फिर इस तरह का एक और बहुत फेमस ट्रैवल है, गांधी का ट्रैवल। When he came to India in 1915, for the first year, he did not indulge himself in any of the political activities. He did not take stand on any political issue in India. He first wanted to know the people of India. So he traveled all throughout India. एक और इसी किस्म का ट्रैवल देखने को मिलता है पार्टीशन के ठीक पहले, या फिर 1946-47 के आसपास। आई थिंक 46 के इलेक्शंस, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले पढ़ा था तो अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो 46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के ठीक पहले नेहरू ट्रैवल्ड थ्रू आउट द इंडिया। आई मीन आई रेड दिस व्हाइल रीडिंग हिज बुक भारत एक खोज। उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको पढ़ते हुए उसने कहीं ऐसा बताया था कि बाय देन आई वाज ट्रैवलिंग द होल इंडिया एंड एट वन पॉइंट आई स्टॉप्ड एंड आई आस्क्ड पीपल हु इज भारत माता, and then people reacted that Bharat Mata is a Devi, is a person whom they worship. But then he answered that no, that is not true. Bharat Mata is not a Devi whom you worship. You are Bharat Mata. The person who answered before this, he was in shock. He could not understand what he wanted to say, and then he went on elaborating what Bharat Mata means. कि देश जो है वो एक झरना नहीं होता, एक पहाड़ नहीं होता, एक लैंडमास नहीं होता, देश कोई जंगल नहीं होता, देश इन सब वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। यू आर द भारत माता। एक किसान जो है वो भारत माता है। सो कुछ उस किस्म के ट्रैवल्स होते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, लोगों को पॉलिटिकली इंसाइट करने के लिए किए जाते हैं, और जो बहुत जरूरी भी होते हैं, नो डाउट। ऐसे ही एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बारे में मैंने पढ़ा,
रिवोल्यूशनरी के बारे में मैंने पढ़ा, उसकी बायोग्राफी तो अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितनी भी रीडिंग्स उसके बारे में पढ़ी, उसकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ी, उसके काम के बारे में पढ़ा, उस रिवोल्यूशन की जो हिस्ट्री पढ़ी मैंने एकेडमिक बुक्स में, उन बुक्स से उसको जाना है मैंने। और अ, जितने रेडिकल चेंजेस उसने इंट्रोड्यूस किए, और जितनी कम उम्र में वो अपने कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए और इनफैक्ट पूरी दुनिया के ऑपरेस्ट लोगों के लिए एक मसीहा बन गया। 32-35 साल का एक इंसान जो इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया के ऑपरेस्ट ऑपरेस्ट लोगों के लिए मसीहा बन जाए, ऐसे इंसान को पढ़ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होना ही होना है, नो डाउट। तो अब तक मैंने उसे हिस्ट्री के थ्रू जाना था, हिस्ट्री के चैप्टर्स के थ्रू जाना था, उसके एक्ट्स को, पॉलिटिकल एक्ट्स को, और जो रिवॉल्यूशन उसने फाइनली कॉज करा लैटिन अमेरिका में, क्यूबा में रिवॉल्यूशन आया फिडेल कास्ट्रो के साथ मिलके। मैं चे गुएवारा की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ। बट it is this book that I had been waiting to read uh, since so many days, since so many years. It's called the Motorcycle Diaries, और ये भी एक ट्रैवल की कहानी है। इसमें कोई ऐसा ट्रैवल नहीं हो रहा है जिसमें वो ज्ञान की खोज में घर से बाहर निकल पड़ रहा है बुद्धा की तरह। ये उस किस्म का ट्रैवल नहीं है। ये वैसा ट्रैवल भी नहीं है जो अ, दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाके वहां के बारे में डिस्क्राइब करना है सिर्फ। ये मार्को पोलो वाला ट्रैवल नहीं है, ये अल्बुरुनी वाला ट्रैवल नहीं है। तो ये वैसा ट्रैवल भी नहीं है। ये गांधी और नेहरू वाला ट्रैवल भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये किस किस्म का ट्रैवल लॉग है, किस किस्म की का डिस्क्रिप्शन है। ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मोटिवेटेड ट्रैवल भी नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा वाला भी ट्रैवल नहीं है। तो आई थिंक इसी के आंसर में मुझे लगता है, जितना मैं खुद के एबिलिटीज से सोच पाया, कि इसी के आंसर में जो भी चे गुआरा ने जिंदगी में किया, और जो भी वहां के लोगों ने अकम्प्लिश किया, वो सब कुछ इसी एक फंडामेंटल क्वेश्चन के आंसर में लाई करता है कि आखिर चे गुआरा का जो ट्रैवल था 1-2 सालों का, जो उसने थ्रू आउट द लैटिन अमेरिका किया, वो अगर इन 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो आखिर वो किस किस्म का ट्रैवल है। और वो जो ट्रैवल है वो उसके थिंकिंग प्रोसेस को, वो उसके सोचने के तरीके को एज अ पर्सन किस तरह से चेंज करता है। आखिर उस ट्रैवल में ऐसा क्या था। अगर हम इस सवाल को ठीक से आंसर कर पाए तो आई थिंक उसने पूरी जिंदगी जो कुछ भी अकम्प्लिश किया, उसने पूरी जिंदगी जितने भी रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया अपने मरने के बाद, आई थिंक हम आंसर को उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। और इस तरह से सोचना बड़ा फैसिनेटिंग है मेरे लिए, क्योंकि खासकर जब आपने अभी अभी उसके ट्रैवलॉग को खत्म किया हो पढ़ के, तो इस तरह से सोचना बहुत फैसिनेटिंग है। एनीवे, कमिंग बैक टू his travel. So he started from the southern edge of Latin America, what we call South America today. When most of it was colonized back then, as India was colonized, as all other nations were colonized. Latin America was also colonized. So he started traveling from the southern edge of South America, and he reached the northern edge of South America. So he traveled an entire continent. और ये बड़ा अजीब किस्म का ट्रैवल था, क्योंकि वो लोग मीन्स दो लोग, एक चे ग्वारा और एक उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों किसी ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, दोनों किसी बस से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, एयरप्लेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। वो हमारी तरह किसी हिल स्टेशन पे जाके, हाईवे हाईवे से हिल स्टेशन पे जाके फोटोज खिंचवा के इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहे हैं। ये बड़ा अजीब किस्म का ट्रैवल है। हम आजकल अगर जब भी कहीं घूमने जाते हैं, बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड देखा है मैंने लोगों में। हम पहाड़ी जगहों पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, और बड़े बचकानी तरह से वहां पे एक्ट करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे पहले कभी कोई आया नहीं और हमारे बाद कभी कोई आएगा नहीं। और ये एक ऐसा अकम्पलिशमेंट है जो मुझे जिंदगी में सबको दिखाना है कि मैंने ये अकम्पलिश किया। एक हिल स्टेशन पे मैं आया, या फिर एक ऐसी जगह आया जहाँ पे पहले बहुत कम लोग आए हैं। तो इस तरह का कोई फैसिनेशन नहीं था उस ट्रैवल में, जिस तरह का फैसिनेशन हमारे बीच होता है। हम हाईवे हाईवे जाते हैं, किसी एक हिल स्टेशन पे होटल में रुकते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ फोटोज लेते हैं, अगले दिन इंस्टा पे पोस्ट करते हैं,
2 दिन फिर हाईवे हाईवे ट्रैवल करके वापस आते हैं और ऑफिस ज्वाइन करके वही टिफिन लंच वाली लाइफ वापस शुरू कर देते हैं। तो ये कोई उस किस्म का ट्रैवल भी नहीं है जिसमें हम वीकेंड्स पे एंजॉय करने जा रहे हैं, पूरे वीकडेज काम कर रहे हैं और वीकेंड्स पे एंजॉय करने जा रहे हैं। सो he was a doctor. He was a doctor, and a point came wherein he just wanted to know people, just wanted to know the people around him, know the environment around him. In this essay, in the essay that he published many years after this travel, A Child of My Environment, he says that I'm no one, I'm not a person, I'm not a person who can be categorized as someone who developed his own beliefs or whatever. He says we, me, us, or every person is a child of his or her own environment. We are not uh, someone who can live upon our own. We are someone who are affected by what we live around. We are the books we read, we are the people we meet, we are the experiences we have. We are the person who develop according to the rules that we face in our day-to-day lives, and the way we react to them, the way we encounter the rules. So we are the child of our environment. So he called himself the child of his environment. uh, तो ये एक अजीब किस्म का ट्रैवल था जिसमें दोनों दोस्त बस निकल पड़ते हैं, और पहली चीज उसका उस निकलने का कोई पर्पस नहीं है। दे जस्ट वांटेड टू नो पीपल, दैट्स इट। उसमें कोई ऐसा ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो नहीं निकल रहे बुद्धा और महावीरा की तरह। वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो अलग अलग जगहों पे जाके उसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं ताकि बाद में जनरेशन उसके बारे में जान सके। इन तीनों में से कोई भी मोटिव उस ट्रैवल का नहीं है। They are just out there. There is no purpose to it, and that is in itself enough to travel, I think. So एक बाइक उठाते हैं दोनों, और दोनों बस निकल पड़ते हैं। और जो तरीका है ट्रैवल करने का वो भी बड़ा अजीब है, क्योंकि बाइक यूजुअली पंक्चर हो जाती थी उनकी, खराब हो जाती, कभी उसका गियर बॉक्स टूट गया, कभी टूल बॉक्स, कभी उसके अंदर के टूल्स खराब हो गए, कभी पंक्चर होना एक कॉमन फिनोमेना था, और एक कॉमन रीजन था क्योंकि क्यों उन्हें बार बार रुकना पड़ता था। तो वो कहीं रुक जाते किसी मैकेनिक के पास, बाइक बन रही है, फिर मैकेनिक वाले ने ही उसको अपने घर में जगह दे दी। अब उस मैकेनिक के साथ वो पूरी रात बिता रहे हैं, रात में सब पार्टी कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, लोफ खा रहे हैं, देन दे आर हैविंग वाइन, ढेर सारा म्यूजिक चल रहा है, नाच गा रहे हैं। सुबह हो रही है, फिर निकल पड़ रहे हैं तो कुछ सामान साथ में ले भी ले रहे हैं, थोड़ा सा मीट, थोड़ी सी वाइन साथ में कैरी भी कर ले रहे हैं। फिर अगले गांव, अगले शहर, किसी लेक के पास रुक गए, वहां पे एक हफ्ता रुक गए। कोई पर्पस नहीं है, कुछ पता नहीं कितने दिन रुकना है, क्यों रुकना है, कहीं भी चले गए, किसी भी ट्राइब को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ कुछ दिन रह लिए। तो ऐसी 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 जिंदगी थी उनकी। कहीं भी बैठ गए, वहां पे फिशिंग कर ली, फिशिंग करके दो दो वक्त का खाना खा लिया, खाना बना लिया, फिर चल पड़े। कहीं भी कोई पक्षी मार लिया, कोई जानवर मार लिया, खा लिए उसको, फिर चल पड़े। कहीं भी रुक गए, किसी दोस्त, कोई कांटेक्ट है, किसी दोस्त का रास्ते में घर पड़ता है कहीं किसी शहर में, उस शहर चले गए, ऑल ऑफ अ सडन उसके घर पे धमक पड़े, एंड देन उसके साथ ढेर सारी पार्टी की, ढेर सारा वाइन पिया, ढेर सारा मीट खाया, फिर वापस निकल पड़े, फिर लोगों को जाना, फिर रास्ते में। तो this is the way he traveled, and it's fascinating to know that travels can be of such kind, and travels should be of such kind, wherein you don't presuppose where you are going. अभी क्या है, हम जाते हैं, I remember when I trekked with my friend, वो ऐसे ही बस निकल पड़ता था। he was a mountainous man, he is a mountainous man in fact, so वो पहाड़ी है, तो वो ऐसे ही निकल पड़ता था, उसका पास कोई पर्पस नहीं, बस हाँ चलना है, चलते हैं, एंड देन ही वुड लीव। बट देन आई वुड कीप ऑन सर्चिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों फेमस है, राइट, क्या ट्रेजेक्ट्री है, कैसा रास्ता होगा, मैं मोबाइल में सर्च करने लग गया हूँ। सो हम बड़ा बचकाने तरीके से कभी कभी रिएक्ट करते हैं आजकल चीजों को लेके, बट देन Che Guevara actually represents how a travel should be organized. The best way to organize travel, I think, is to not organize it. So that's what he teaches. And then within this travel, he develops this empathy for the people he was traveling with and he met along his travels.
he develops this empathy, he gets to know, पहली बार उसको उसको पता चला कि भूख जैसी भी कोई चीज होती है, भूख लगना और खाना नहीं मिल पाना, ये एक फिनोमेना है जो एग्जिस्ट करता है। हंगर जैसी चीज है दुनिया में, और वो बहुत वाइड स्प्रेड है। क्योंकि लैटिन अमेरिका बहुत गरीब था, अभी अभी भी बहुत स्ट्रगल से गुजर रहा है लैटिन अमेरिका, उस वक्त तो बहुत गरीब था। पहली बार उसने जाना कि बीमारियां हैं जो दुनिया को बहुत हिला कर रखती हैं, जिसका इलाज जो है वो ऑप्रेस्ड लोग, पॉवर्टी स्ट्राइकन लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, और वो बस यूं ही मर रहे हैं। उसने पोलियो को बहुत करीब से देखा पहली बार, और देखा कि लैटिन अमेरिका कितना ज्यादा पोलियो से अफेक्टेड है। तो तो पहली बार उसने फिलॉसफी डेवलप करनी शुरू की अपने खुद की, कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसे एक मरीज को टेस्ट करना है। डॉक्टर the essay I'm going to read right now describes this in more better words, because I know I'm not able to put up very good words here, because I'm recording, I know, as I already said, I'm recording this video out of fascination. There is no construct that I wanted to deliver just before recording this. I should have, I think. So he says that डॉक्टर को अपनी ड्यूटीज को समझना होगा, और वाइडर कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उसका उसका एक प्राइमरी गोल उसको एस्टैब्लिश करना होगा, तभी वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएगा। क्योंकि चे गुएवारा कभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं रहा, फिर भी वो अपनी जिंदगी का और हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनकर उभरा। तो ऐसा उसने कोई मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ के नहीं किया, ऐसा मत, नो डाउट उसने बाद में पढ़ा, लेकिन जो इनिशिएशन था मार्क्सिज्म के लिए उसका, चे गुएवारा का, वो मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ के नहीं आया था, वो एक्सपीरियंस आया था, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आया था। हम अभी एक्सपीरियंशियल पेडागोजी की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। आई टीच इन दिस स्कूल wherein experiential learning is the foremost model they use to teach the students, they use to engage with the students. तो उसने जो कुछ भी एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स और दुनिया के बारे में जाना, और जो भी विजन डेवलप किया, वो उसने मार्क्स की थ्योरी को पढ़ के डेवलप नहीं किया, वो उसने एक्सपीरियंस से डेवलप किया। बाद में उसने मार्क्स को पढ़ा, बाद में उसने लेनिन को पढ़ा, बाद में उसने वो सारी थ्योरीज पढ़ी, वो सारा पॉलिटिक्स पढ़ा, उसके बारे में जाना। लेकिन जो इनिशिएशन था उस थॉट प्रोसेस में, वो किताबों से नहीं आया, वो एक्सपीरियंस से आया। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए पर्सनली एक फायदे की चीज है, बीइंग अ टीचर ऑफ अ स्कूल वेयर इन एक्सपीरियंशियल पेडागोजी इज द वे टू मैनेज स्टूडेंट्स। सो I lost the track. Where was I? Yeah, the way they traveled. So कहीं भी रुक जाना, कहीं भी फीस्ट करना, और कहीं भी फिर निकल पड़ना। कई बार ऐसा हुआ कि रास्ते में उन्हें रुकने का कोई घर नहीं मिला, रुकने की कोई जगह नहीं मिली, तो वो ऐसे ही रास्ते में कहीं भी टेंट लगा के रुके हुए हैं। कई बार बीमार पड़ा, वो मरने की हद तक बीमार पड़ा, बट जैसे ही ठीक होते चल पड़ते। उन्होंने बीच में एक लिफ्ट भी लिया। कई बार ऐसा हुआ कि बाइक टूट टूट फूट के बिखर पड़ी पड़ी बाइक, तो उन्होंने ट्रकों में ट्रैवल किया, एक बार एक दो बार शिप्स में ट्रैवल किया, कभी ओशंस के साइड साइड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी है। और कभी आप ये किताब पढ़िए, इसका नाम है द मोटरसाइकिल डायरीज। एक 150 250 पेज की किताब है, आई थिंक 150 पेज की किताब है, और उसी में उसने पूरा ट्रैवल बयान किया है। और अगर आप ये सोचेंगे कि इस किताब में आपको चे गुएवारा का पॉलिटिकल इमेजिनेशन मिलेगा बहुत ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ नहीं है। इस किताब में क्यूबा के रिवॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। हाँ, ऑपरेशन की थोड़ी मोड़ी बात की गई है जब वो फाइनली इनकाउंटर करता है ऑपरेशन जैसी चीज को। यहाँ पे वो सब है ही नहीं, यहाँ पे वो बस ये बता रहा है कि वो कैसे ट्रैवल कर रहे थे, दैट्स इट। और मेरे लिए, आप उन रीडर्स के लिए जो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि चे गुएवारा ने क्या 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 किया इस ट्रैवल के बाद, क्योंकि ये ट्रैवल जब वो कर रहा था, जब तब वो 21-22 साल का मुश्किल से रहा होगा, 22-23 साल का एक लड़का रहा होगा वो। तो उस वक्त वो डॉक्टर ऑलरेडी बन चुका था, आई गेस। तो जब ये तो फॉर दोज रीडर्स जो ये बात जानते हैं कि इस ट्रैवल के बाद, जब वो फाइनली पॉलिटिक्स की तरफ मूव करता है, जब वो फाइनली एक रिवोल्यूशनरी होने के रास्ते पे चलता है,
तो उसके बाद वो क्या चीजें अचीव करता है और कैसे पूरे इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे रिवोल्यूशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो जो इस बात से ऑलरेडी अवेयर हैं, जो उसकी हिस्ट्री को ऑलरेडी जानते हैं, उनको ये किताब बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ये एक इसमें एक लेमैन जो है वो पहली पहली बार दुनिया को जान रहा है और बड़े अजीब से तरीके से जान रहा है। हम यूजुअली जानते हैं किताबों को पढ़ के, हम एक्सपीरियंस नहीं करते। as teachers, as students, we get to know the world, most of the world we get to know through our books. आजकल यूट्यूब से लोग जानते हैं, इंस्टा से जानते हैं, व्हाट्सएप से जानते हैं, बट यहाँ पे दुनिया को जानने का तरीका एक बड़ा अजीब सा है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी तरीके ने, उसी इवेंट ने, उसी ट्रैवल ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और इस एक ट्रैवल ने सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं बदला, उसके देश में रहने वाले और उसके पूरे कॉन्टिनेंट में रहने वाले ऐसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि इस ट्रैवल के बाद उसने जो किया, उसने ह्यूमैनिटी को कुछ बहुत बड़ा दिया, जिससे आज तक लोग इंस्पायर हो रहे हैं। पूरी दुनिया के रिवोल्यूशनरीज आज तक उस एक्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, उस रिवोल्यूशनरी एक्ट से इंस्पायर हो रहे हैं जो चे गुवेरा ने बाद में अचीव किया। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बातों को स्ट्रेच कर दूंगा तो फिर हम उस ऐसे को नहीं पढ़ पाएंगे। लेट्स रीड एन एसे। दिस इज नॉट एक्चुअली एन एसे, इट्स अ स्पीच। ये स्पीच जो है चे गुवेरा ने 1960 में दी। इट इज कॉल्ड अ चाइल्ड ऑफ माय एनवायरनमेंट। और ये ट्रैवल जो था उसके 7-8 साल के बाद ये स्पीच आई। तो हुआ ये कि 1952-53 के आसपास शायद ये ट्रैवल हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और स्पीच आ रही है 1960 में। 1960 में महज 7-8 सालों में चे गुवेरा एक वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन बन चुका है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन चुका है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली क्यूबा में रिवॉल्यूशन लीड किया और अमेरिका की जो इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप थी वहां पे उसको हटाकर एक एक नई दुनिया बसा दी। एक नया किस्म का सिस्टम वहां पे खड़ा कर दिया, सोशलिस्ट सिस्टम खड़ा कर दिया, कम्युनिस्ट सिस्टम खड़ा कर दिया। तो 1960 में जब वो स्पीच दे रहा है तब वो क्यूबा में रिवॉल्यूशन वो ऑलरेडी ला चुका है। और वो इस स्पीच में फाइनली बात करता है कि रिवॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, रिवॉल्यूशन की डायनेमिक्स क्या होना चाहिए, कैसे हमें रिवॉल्यूशन में पेडागोजिकल हो जाना चाहिए। उसमें पेडागोजी की भी बात करता है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, being as a facilitator and a teacher in a school. I mean, I think everyone should read this. Everyone who is attached to the world of education in one way or the other should read this. And there are so many things you'll get to know as I read about this speech. So by the time he's giving this speech, he's already a renowned person, and within a span of 7 to 8 years, from being a layman traveler, he became the famous revolutionary, what we know as Che Guevara today. And this speech is given to the medical students. Now imagine एक डॉक्टर जो रिवोल्यूशनरी बन गया और जिसने क्यूबा में सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी, वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स की मीटिंग को वापस से एड्रेस कर रहा है। तो पहले तो यही इमेजिन करना बड़ा अजीब है कि उसने क्या कहा होगा। उसने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बातें करी होंगी, या फिर अपने सिर्फ रिवोल्यूशन या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करी होगी, या फिर उसने पॉलिटिक्स और मेडिकल प्रोफेशन को इंटीग्रेट करके कुछ बात की होगी। सो द आंसर इज द थर्ड वन। ही इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स एंड medicine, and he integrated politics and the profession of doctor, and then he talked something to his students. So see what he says. Almost everyone knows that I started my career as a doctor a number of years ago. When I started out as a doctor, when I began to study medicine, the majority of the concepts I hold today as a revolutionary were absent from my storehouse of the ideas. Yeah. I wanted to succeed, as everybody wants to succeed. I dreamed about being a famous researcher.
I dreamed of working tirelessly to achieve something that could really be put at the disposal of humanity, but that at the same time would be a personal triumph. I was, as we all are, a child of my own environment. Through special circumstances, and perhaps also because of my character, after receiving my degree, I began to travel through Latin America and I came to know it intimately. I came to know it intimately. Except for Haiti, Haiti is a place. Except for Haiti and the Dominican Republic, I have visited in one way or the another all the other countries of Latin America. So I told you he started from extreme south of the Latin America and reached the northernmost point of the continent. Northern, it's not exactly northernmost, but yes. In the way I traveled, first as a student and afterward as a doctor, I began to come into close contact with poverty, with hunger, with disease, with the inability to cure a child because of lack of resources, with the numbness that hunger and continued punishment cause until a point is reached where a parent losing a child is an unimportant incident. I will repeat, until a point is reached where a parent losing a child is an unimportant incident, as often happens among the hard hit classes of our Latin American homeland. And I began to see there was something that at that time seemed to me almost as important as being a famous researcher or making some substantial contribution to medicine, to medical science, and this was helping those people. But I continued being, as all of us always continue being, a child of my environment. Then I realized one fundamental thing. To be a revolutionary, to be a revolutionary doctor, or to be a revolutionary, there must first be a revolution. The isolated effort, the individual effort, the purity of ideals, the desire to sacrifice an entire lifetime to the noblest of ideals means nothing if that effort is made alone. If that effort is made alone, solitary, in some corner of Latin America, fighting against hostile governments and social conditions that do not permit progress. A revolution needs what we have in Cuba, an entire people mobilized, who have learned to use the arms and the practice of combative unity, who know what a weapon is worth and what the people's unity is worth. Then we get to the heart of the problem that today lies ahead of us. We already have the right and even the obligation to be, before anything else, a revolutionary doctor, that is, a person who puts the technical knowledge of his profession at the service of the revolution and of the people. So he's coming up with a new term, revolutionary doctor. Then we come back to the earlier questions. How does one work for the social welfare effectively? How does one reconcile individual effort with the needs of the society? We again have to recall that each of our lives was like, what each of our lives was like, what each of us did and thought as a doctor or in any other public health function prior to the revolution. We have to do so with profound critical enthusiasm. We will then conclude that almost everything we thought and felt in the past epoch should be filed away and that a new type of human being should be created. So every belief that we had in the past before the revolution should be done away with. Here we are in 1959, in 1960, after the revolution is almost over, to create a new kind of human being. Everything we believed in, every ideal that we believe in before this should be done away with. Right? If each of us is their own architect of that new type of human being, then creating a new type of human being who will represent the new Cuba will be much easier. You must have seen children who by their physical stature appear 8 or 9 years old, but who nevertheless are almost all 13 or 14. They are the genuine children of Sera Mastra, this is a place, the genuine children of hunger and poverty in all its forms. They are the creatures of malnutrition.
In this small Cuba, with 4 or 5 television channels, with hundreds of radio stations, with all the advances of modern science, when one when one night those children arrived at school, or for the first time they saw the electric light, they exclaimed that the stars were very low that night. Those children, whom some of you would have seen, are now learning in the collective schools, from the ABCs right to the learning a trade, right up to the very difficult science of being revolutionaries. These are the new kinds of human beings born in Cuba. They are the beings born in isolated places in remote parts of Sierra Maestra and also in the cooperatives and workplaces. So now, engaging the students in schools, engaging the students in various cooperatives, a new kind of human being will be created. And they will not be the product of hunger. They will not be the product of poverty. They will be the product of scientific experiments that we do, in the form of teaching them or engaging them with revolutionary sciences. They will be the product of that pedagogical process, not the earlier pedagogical process. The revolution is not, as some claim, a standardizer of collective will, of collective initiative. To the contrary, it is a liberator of human beings' individual capacity. When the revolution does so, however, is to direct that capacity. What the revolution does so, however, is to direct that capacity. Our task today is to orient the creative talent of all the medical professionals towards the task of social medicine. Imagine, so now this term social medicine is very revolutionary again here, because medicine today, as we see it, is not social. I think the medicines have become so costly that we can't afford it. Most of the medicine are out of reach of the common oppressed masses. So if you have to make medicines available to the people of the lowest strata of society, this concept of social medicine is very interesting. So he comes up with very new terms in his speech. Individualism as such, as the isolated action of the person alone in a revolution, in a social environment, must disappear in Cuba. Individualism tomorrow should be a proper utilization of whole individual to the absolute benefit of the community. So I'm reading some excerpts only. I'm not reading the whole speech. One way of getting to the heart of medical question is not only visiting these places, but also getting to know the people who make up those cooperatives and work centers. Go there and find out what diseases they have, what their ailments are, what extreme poverty they have experienced over the years, inherited from centuries of repression and total submission. The doctor, the medical worker, should then go to the heart of their new work, which is, as a person among the masses, a person within the community. Whatever happens in the world, by always being close to the patient, by knowing his or her psychology so deeply, by being the representative of those who come near pain and relieve it, the doctor always have a very important job, a job of great responsibility in social life. We should not view the future with fatalism and divide human beings into children of working classes or peasantry or counter-revolutionaries. This is simplistic. It is not true. That is simplistic. It is not true. And there is nothing that educates an honorable person more than living within a revolution. So एक ये बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव इसने यहाँ पे दिया है. होता ये है कि जब हम रिवोल्यूशनरी लाइफ में होते हैं और जब हम एक कम्युनिटी लाइफ में होते हैं जहाँ पे हम रिवोल्यूशन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं, तो हम कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं लोगों को. ये तो एलीट का बच्चा है, वो जो है सो ऑप्रेस्ड का बच्चा है, वो जो है सो काउंटर रिवोल्यूशनरी का बच्चा है, वो किसी नाजी का बच्चा है, वो किसी फासिस्ट इंसान का बच्चा है. तो यहाँ पे उसने क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया है कि वी शुड नॉट डू दिस.
right? We should not view the future with fatalism and divide human beings into children of the working classes or peasantry and or of the counter-revolutionaries. That is simplistic, it is not true, and there is nothing that educates an honorable person more than living within a revolution. So that should be prohibited. I think once you are in a revolution, all are comrades. And it should come from both sides, not only from the right side of revolutionary, but from the side of those people who are either oppressed or the ones who are, let's say, who are the product of bourgeoisie. So from both the sides, if this understanding comes that we are not the children of elites, or we are not the children of peasantry or the workers of factories, we are comrades, we are together in our own capacity, and we are partners in this revolutionary process, and we have no other identity than being comrades, then I think this process of being in a revolution would become much more beautiful than what it can be the other way. So some of the insights in this speech are very heart touching. The next thing is also, and the next one I'm going to read is also very intuitive. We learn perfectly that the life of a single human being is worth millions of times more than all the property of the richest man of the earth. एक एक ऐसा इंसान जो कि हाईवेज पे ओवर ब्रिजेस के नीचे आग जला के ठंड की रात में सोने को मजबूर है, उस इंसान की जिंदगी भी इस धरती पे जो सबसे अमीर इंसान है, लेट्स से अंबानी अंबानी की सारी दौलत मिला देंगे, तब भी उसका उतना वर्थ नहीं होगा जितना वर्थ उस अंगीठी के पास सो रहे इंसान की जिंदगी का है. आई थिंक जिस दिन हम ये फंडामेंटल चीज समझ लेंगे, आई थिंक उस दिन हम ऑटोमेटिकली रिवोल्यूशन के थ्रू रिवोल्यूशनरी पाथ पे ओरिएंट हो जाएंगे. और मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि रिवोल्यूशनरी पाथ पे ओरिएंट हो जाए तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और ऑल ऑफ अ सडन मूवमेंट्स का हिस्सा बन जाए. ऐसा डे इन डे आउट नहीं होता. अलग तरीके भी होते हैं रिवोल्यूशनरी पाथ को परस्यू करने के. आप एजुकेशन के फील्ड में रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट देयर इज दिस one more philosopher that you should study, one more psychologist and educational specialist. His name is Paul Freire. He is also from South America. He's from Brazil. So Paul Freire is another person who has changed the ways I have started seeing education recently, because he wrote this book called Pedagogy of Oppress. He has written many books, but then this particular book touched my heart the most. So therein he elaborates how education as a tool can be used for the cause of revolution, for the cause of changing the structure of society, and how classrooms can also become a political workplace, how classrooms can also become a place of political activism, and a very constructive activism, in fact. So he is also a very good read. So we'll talk more about Paul Freire in some other video. Let's not digress. We learn perfectly that the life of a single human being is worth millions of times more than all the property of the richest man of the earth. We learned it there. We who were not the children of working class or the peasantry. So why should we now shout to the four winds that we are the privileged ones and that the rest of the Cuban people cannot learn to? Yes, they can learn. In fact, the revolution today demands that they learn, demands that they understand well that the pride of serving our fellow men is much more important than good income. You know, बहुत स्ट्राइकिंग लाइन्स हैं इसमें. 1 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, फिर 2 लाख रुपए हो जाएगी, फिर 10 लाख रुपए हो जाएगी, फिर 20 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न करोगे. आजकल तो आईटी सेक्टर में इसी तरह से सैलरीज भी ऑफर करते हैं. So what he says here is the pride of serving our fellow men is much more important than having a good income. In India we see, I have seen this बहुत अजीब सा एक सिस्टम है जहां पे हमारा लाइफ गोल ही होता है
रोजगार पाना। तो तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिस देश में यंग लोगों के गोल को सिर्फ और सिर्फ जॉब लेने तक ही लिमिट कर दिया गया हो, जहां पे जॉब लेना एक प्रिविलेज की तरह फील होता हो, उस देश में एक फर्दर किस्म की कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी कैसे बिल्ड की जा सकती है? ये तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जॉब लेने के लिए ही वो अपनी लाइफ स्ट्रगल करता हुआ बिता रहा है, और जैसे ही जॉब मिलेगी वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और फिर उसको लग रहा है कि अब और कमाना है, जॉब इज नॉट इनफ, दिस इनकम इज नॉट इनफ, तो फिर अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके स्ट्रगल के मोटिव्स हमने चेंज कर दिए ऑल ऑफ अ सडन। सो द यंगर जनरेशन इन दिस नेशन आर स्ट्रगलिंग नॉट फॉर being part of a cooperative society, but to increase their income day in and day out, multifolds times. And this is bizarre. This is bizarre for me, but I don't know, it has become a common norm. All the friends I have encountered with, they are yearning to earn more and more and more and more. So this also comes within, this also affects us. At some point, we tend to give up. चलो छोड़ो यार, ठीक है, बढ़िया है, और पैसे कमाओ, बढ़िया है, ये लाइफ भी अच्छी है। तो थोड़ा सा आपका मेंटल एडजस्टमेंट भी होने लग जाता है धीरे धीरे, आप इसी तरह के लोगों के बीच रहते हुए। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बीच हम एग्जिस्ट करते हैं, और जिसको जिसको चे गुवेरा ने सोचिए उसी वक्त समझ लिया, जब वो क्यूबा में रिवोल्यूशन ला रहा है, उसी वक्त उसने समझ लिया कि हमारे जो गोल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, जितने हमारे स्ट्रक्चर्ड गोल्स हैं उन सब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। That they understand well that the pride of serving our own fellow man is much more important than good income, that the people's gratitude is much more permanent. The gratitude of people is more permanent than income, is more valuable than income, much more lasting than all the gold one can accumulate. जितना भी सोना और जितना भी पैसा जमा कर लो, लोगों का gratitude is more important. Each doctor in the sphere of their activity can and should accumulate that prized treasure, the people's gratitude. We should go with an investigative zeal and with a humble spirit to learn from the great source of wisdom, that is the people. यूजुअली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो फील्ड्स पे जब जाते हैं, मैंने देखा उनमें एक अकड़ होती है। उनको लगता है कि हम हीरो हैं, और ये लोग जो जिनको मैं सर्व करने आया हूँ, ये लोग पहले मेरी सेवा करेंगे, फिर मैं इनके लिए कोई पॉलिसी लेकर आऊंगा। सो इस तरह का किसी भी किस्म का एरोगेंस यहाँ पे निगेटेड है, यहाँ पे उसकी कोई बात नहीं की जा रही है। ही इज स्ट्रेट अवे सेइंग दैट कैरी अ हम्बल स्पिरिट विथ योरसेल्फ एंड विजिट द पीपल एज अ लर्नर, और उनके साथ जाकर उनके जैसा ही हो जाना होगा, तभी हम भी उनसे सीख पाएंगे और तभी हम उनको कुछ दे पाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स यहाँ पे गांधी को डालना सही नहीं है, बट गांधी ऑल्सो फॉलोड दिस मेथड टू अ बिट, वेर इन एक, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि ऐसे जमाने में जब व्हाट्सएप नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब इंस्टा नहीं था, जब फॉरगेट इंटरनेट, जब टीवी नहीं था, जब 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 न्यूज़पेपर्स पढ़ना एक प्रिविलेज माना जाता था, जिनको न्यूज़पेपर्स पढ़ना आता है वो एक रेस्पेक्टेड इंसान हुआ करता था सोसाइटी का। तो एक ऐसे जमाने में भी एक ऐसा इंसान जो नेशन वाइड फेमस हो गया। आजकल नेशन वाइड फेमस होना बड़ा आसान है, एक रील बना दो, आप नेशन वाइड फेमस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि उस जमाने में, आज के लगभग 100 साल पहले, अगर गांधी जैसा इंसान फेमस हुआ तो वो बस इस क्वालिटी की वजह से हुआ, क्योंकि वो एक हम्बल स्पिरिट के साथ लोगों के पास जाता था, and he became one of them. He did not then identify himself as the lawyer Mohandas Karamchand Gandhi or as the famous political leader who has come from South Africa. He identified himself as the peasant. He identified himself as the cleaner. So he would go with them and he would start living their life. He would become a part of that community. So that is very uh, significant here. We will see that diseases are not always treated as one treats illness in a big city hospital. We will see that the doctor also has to be a farmer, that he or she has to learn to cultivate new foods, and by his or her example, to cultivate the desire to consume new foods,
to diversify the food structure in Cuba, so small and so poor in agricultural country that is potentially the richest on the earth. We will then see that under such circumstances, we will have to be quite pedagogic. Therein he brings in pedagogy. Under such circumstances, we will have to be quite pedagogic, at times very pedagogic, that we will have to be politicians, that the first thing we will have to do is not to go offering our wisdom, but showing that we are ready to learn with the people. This one is important. So we don't become teachers, we become learners. We become a part of community wherein we give and take and share knowledge. We become learners to carry out that great and beautiful common experience to build a new Cuba. So हमें pedagogically सिर्फ डॉक्टर होना काफी नहीं है, हमें वहां पे जाके फार्मर हो जाना पड़ेगा, हमें वहां जाके पॉलिटिशियन हो जाना पड़ेगा, हमें वहां पे अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी पेडागोजी को पूरी तरह से चेंज कर देना हो, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस को क्रिएट करना हो. Now the people should learn that upon the ruins of a crumbled system, one must build a new one that brings about the people's absolute happiness. We have definitely become convinced that there is a common enemy. Our enemy and the enemy of all of Latin America is the monopolistic government of the United States of America. Then comes the second part. What are our goals in Cuba? What do we want? Do we want the people's happiness or not? Are we struggling for Cuba's absolute economic liberation or not? Are we not struggling to be a free country among the free countries without belonging to any military bloc, without having to consult any embassy of any great power on earth about any domestic or foreign decision we make? Are we thinking of redistributing the wealth of those who have too much to give to those who have nothing? Are we thinking here of doing creative work, a dynamic daily source of all of our happiness? If so, then we already have the goals to which we referred. At times of great danger, at times of great tension, and great creation, what counts are the great enemy and the great goals. If we agree, if we all already know where we are going, then whatever happens, we must begin our work. And this is the last part of the speech, last two paras. I was telling you that to be a revolutionary requires having a revolution. We already have it. And a revolutionary must also know that people with whom he or she is to work. I think we still don't know one another well. I think we still have to travel a while. I think we still have to travel a while along to that road. If we know the goals, if we know the enemy, and if we know the direction in which we have to travel, then the only thing left for us is to know the daily stretch of the road and to take it. This is so beautiful. Nobody can point out that stretch. That stretch is the personal road of each individual. It is what he or she will do every day, what he or she will gain from their individual experience, and what he or she will give of themselves in practicing their profession dedicated to the people's well-being. If we already possess all the elements with which to march towards the future, let us then recall that phrase of some writer. The writer's name is mentioned here. I can't recite it. Then let us call that phrase, which at this moment I am not putting into practice, but which we must constantly put into practice. And the phrase is, the best form of saying is doing. I would repeat, the best form of saying is doing. And let us then march towards the future of Cuba. So कहने का सबसे अच्छा तरीका है करना. This is it. This is the speech which he finally gave. I don't know if this video has any end product to it. If the viewers would carry something with it, but I have a lot to carry on.
And the past 2 or 3 years have been very, very, let's say, inspiring for me, because uh, uh, I got lost in some of very different methods of how a life should be lived, of very different methods of teaching, learning, engaging. And the major reason why I could not record my poems or videos is just because I was in a very different mindset. I am still in a very different mindset, and sometimes it becomes very recurring when you keep doing the same things. So I had this opportunity to explore various means and methods of education and the world of education. So I'm still exploring it, and God knows what I'm coming up with next. So I'm sure I'm going to come up with next video very soon. There is a lot going on in my mind, and I think next time when I come over to record, I am not this vague. I would plan something concrete beforehand and then deliver. It's just that I was so much fascinated after reading this book that I wanted to record something or uh, something related to that, and it went so unplanned that I could not frame it well. But it's okay. Sometimes ambiguity is also fine. Thank you so much.